Okay, hello guys. So today we are going to learn Queen's Gambit. Okay, Queen's Gambit introduction नहीं है, part 1 Queen's Gambit के बेसिक्स का इंट्रोडक्शन है. ओके हाँ, सुनो, हमने इसके पहले एक क्लास किया था. इन दैट वी हैड लर्न इंट्रोडक्शन टू D4. करेक्ट. हाँ, तो उसमें हमने पहले क्या सीखा था कि केपीओ क्या है. जब दोनों किंग के पॉन चलाए जाते हैं, मींस E4 E5, दिस इज कॉल्ड एज केपीओ, किंग्स पॉन्स ओपनिंग. करेक्ट. वैसे ही जब दोनों क्वीन पे पॉन चलाए जाते हैं, फर्स्ट D4 D5, दैट इज कॉल्ड एज क्वींस पॉन्स ओपनिंग. ओपनिंग क्या था? गेम कैसे स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग. तो ऐसे गेम स्टार्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ओपनिंग्स है. ओके हाँ, जैसे गेम तुम लोग ओपन करते हो तो अलग अलग ओपनिंग्स है. ओके हाँ, तो आज हम लोग कौन सी ओपनिंग की बात करने वाले हैं? गेम स्टार्ट करने कौन से तरीके की बात करने वाले हैं? क्वींस गैम्बिट. ठीक है हाँ, तो पहले इसके लिए एक बार समझ लेते हैं हम लोग कि गैम्बिट क्या होता है. देखो, गैम्बिट मतलब टेम्पररी कुछ अपोनेंट को मारने देना. पहले खुद का कोई चीज अपोनेंट को मारने देना, पर थोड़े टाइम के बाद हमें हमारी चीज वापस मिल जाएगी. अगर अपोनेंट वो चीज को बचाने जाता है और हमें रिटर्न नहीं करता, तो इन दैट केस वो उसको हमें या तो वो चीज वापस मिलेगी, या तो अगर अपोनेंट ने उसको रिटेन करने की ट्राई की तो हमें और बड़ा एडवांटेज मिलेगा. मे बी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गैम्बिट में हमने को एक पॉन मारने दिया, तो वो पॉन के बदले थोड़े थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर फ्यू मूव्स इन द गेम, वी विल गेट दैट पॉन बैक. वापस वो पॉन मारने मिलेगा ही मिलेगा. और अगर वो पॉन बचाने जाता है अपोनेंट, तो या तो कोई और पीस मिल जाएगा उसके बदले, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिल जाएगा, कोई पोजिशनल एडवांटेज, या फिर कोई अटैक, किंग साइड अटैक, या समथिंग लाइक दैट. ओके, तो हमें या तो वो चीज की रिकवरी होगी, या तो ज्यादा बड़ा एडवांटेज मिलेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. आज हम लोग देखने वाले हैं क्वींस गैम्बिट. अभी देखो, क्वींस गैम्बिट का स्टार्टिंग मूव्स क्या है. D4 व्हाइट, जैसे कि फर्स्ट मूव व्हाइट खेलेगा D4. ओके, अभी यहाँ पे ब्लैक के पास अलग अलग ऑप्शंस है. नाइट F6 एंड D5 आर द बेस्ट रिप्लाई, व्हाट पर्सनली आई लाइक. यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी है, लाइक दैट, लाइक E6 खेल सकते हो. There are many other options. What personally two replies what I like is either to go for D5 और टू गो फॉर NF6 क्यों या D5 क्यों, दोनों ही E4 को स्टॉप करते हैं. ओके, मैं पर्सनली D5 ज्यादा प्रीफर करता हूँ. व्हेन आई प्ले D5. ओके, अगर मैं ब्लैक रहा और मेरे सामने किसी ने D4 खेला तो. सो D4 D5 क्वींस पॉन्स ओपनिंग में गया. अब अगर समझो तुम व्हाइट हो, तुमने ये खेला. ओके, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट प्लेइंग क्वींस गैम्बिट. तुम अगर ये ओपनिंग से खेलना चालू नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं. तो खेलोगे तभी नॉलेज बढ़ेगा, अलग अलग पोजीशंस का आइडिया आएगा. ओके, तो देखो D4, अगर अपने D5 खेलता है तो यहाँ पे तुम लोग जनरली लोग खेलते होगे नाइट F3 और वो सब खेलते रहोगे. बट आई एम टुडे गोइंग टू शो यू सच अ वे जहाँ पे हम लोग अपोनेंट को एक पॉन मारने देंगे, गैम्बिट करेंगे, पर वो पॉन बाद में वापस भी ले लेंगे. टेंशन मत लो. द नेक्स्ट मूव इज D4 D5 C4. क्या? C4. सर एक पॉन मर रहा है फ्री में, देयर इज नो वन प्रोटेक्टिंग द पॉन, आई नो दैट. सी, इसीलिए तो इसको गैम्बिट कहते हैं. ओके, ये क्या है? क्वींस गैम्बिट. क्या? क्वींस गैम्बिट. ठीक है, मतलब इसमें हम लोग क्वीन साइड का पॉन चलाकर क्वीन C वाला पॉन हम लोग गैम्बिट कर रहे हैं, उसको फ्री में मारने दे रहे हैं. ठीक है हाँ, अब ये देखो, हमने जैसे ये पॉन चलाया, अब अपोनेंट के पास यहाँ पर थोड़े अलग अलग ऑप्शन है. पहले हम लोग रीजन समझ लेते हैं कि हम लोग ये पॉन गैम्बिट क्यों कर रहे हैं. ठीक है, और वो रिकवरी भी कैसे होगी, मैं वो तीनों पॉइंट पे बात कर लूंगा. ठीक है, पहले हम लोग ये अपोनेंट क्या क्या खेल सकता है. अपोनेंट यहाँ पर खेल सकता है, एक है मार देता है. हमने उसे गैम्बिट ऑफर किया, उसने गैम्बिट को एक्सेप्ट किया, तो इसे कहा जाता है, अगर मारा तो क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड. ठीक है हाँ. नेक्स्ट, दूसरा है, हो सकता है कि वो E6 खेल के बचाए. वो बोलेगा कि नहीं नहीं, मुझे पता है तू मुझे फंसाने की या ट्राई कर रहा है. ओके, तो मैं नहीं मारूंगा. सो ही कैन पुश द पॉन E6 खेल के वो क्वींस गैम्बिट ऑफर को डिक्लाइन करेगा, ना बोलेगा. तुमने ऑफर दिया पर उसने ना बोल दिया, मैं नहीं मारूंगा. ही डिक्लाइंड योर ऑफर, सो क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन. ओके, तो E6 आ जाता है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, ऑर्थोडॉक्स वेरिएशन. इसके अलावा ही कैन इवन प्ले C6, दैट इज स्लाव डिफेंस, एंड पर्सनली दिस वन इज माय फेवरेट. क्यों? सिंपल है, व्हाइट अगर सी पॉन से अटैक कर रहा है तो ब्लैक भी सी पॉन से डिफेंड करे, खत्म ना बात, लाइक दैट. ओके, सिंपल आइडिया. अगर मारा मारी हुई तो भी दोनों के सी पॉन ही यहाँ से हटेंगे और पोजीशन दोनों की एक जैसी ही रहेगी. सो आई लाइक दैट मूव वेरी मच. ओके, C6. अब इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी है, लाइक नाइट F6.
ओके, बट मैं वो नाइट F6 को कैसे डील करना है वो समझाऊंगा, पर पहले एक बात सुन लो, अगर ये खेला तो आगे कैसे खेलना है क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड, ये हम लोग क्वींस गैम्बिट पार्ट 2 में सीखेंगे। क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड में डिक्लाइन वाला वेरिएशन, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन ऑर्थोडॉक्स वेरिएशन पार्ट 3 में आएगा। स्लाव डिफेंस क्वींस गैम्बिट पार्ट 4 स्लाव डिफेंस में आएगा। ओके, नाइट F6 से डील करना मैं अभी सिखा दूंगा इंट्रोडक्शन में। अब देखो, मैं तुमको एक लॉजिक समझाता हूँ, इसका रीजन मैं बाद में समझाऊंगा, पर पहले हम लोग मूव ऑर्डर यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। अगर समझो उसने NF6 खेला, द बेस्ट मूव फॉर यू इज जस्ट सिंपली किल इट। ठीक है, मार दो। अगर उसने हमने मार दिया, ठीक है, अब अगर उसने मारा तो अभी वो क्वीन से भी मार सकते हैं और नाइट से भी मार सकते हैं। ओके, इफ ही प्लेस एनीथिंग एल्स जस्ट किल इट, सिंपल, एंड देन गेट द नाइट्स आउट एंड प्ले बाय योरसेल्फ, गेट द बिशप आउट एंड ऑल, वेरी सिंपल। अब अगर वो मारा तो क्या, देखो, अगर सिंपल वो नाइट से मारता है, जस्ट प्ले E4, ठीक है, और हमारा काम हो गया। कैसे, अगर वो यहाँ पे जाता है तो इट्स फाइन, वी कैन सिंपली गेट द नाइट आउट, सॉरी, अगर वो नाइट यहाँ पे जाता है तो जस्ट सिंपली इन फ्यूचर वी विल गेट द 2 नाइट आउट, वी विल जस्ट गेट द बिशप्स wherever we like. Okay, on any of this square you can get a bishop and go for castle and play. Very easy and very simple for you to play. Okay, अगर इधर गया तो, बट व्हाट इफ इट डजंट गो देयर, अगर वो वापस जगह पे चला गया तो F6 पे, टेंशन मत लो, F6 पे आया, वी कैन अगेन प्ले दिस वन, लाइक E5, वापस नाइट पे अटैक करो। सी ही कैन गो ओवर देयर, बट वी कैन अगेन इंक्रीज द प्रेशर एंड स्टार्ट अटैकिंग इट। ओके, और यू कैन प्ले सच मूव्स। हाँ, सो बेस्ट मूव फॉर हिम इज टू गो ओवर। यहाँ पे जाएगा तो ट्रैप हो रहा है, यहाँ से अटैक होगा और नाइट को भागने को कोई जगह होगी नहीं पीछे, हर जगह पे फिर वो नाइट मरेगा। सो नाइट में गो ओवर हियर ऑल्सो। इफ नाइट गोes over here, you can just simply play, if means if you play E5, if he plays knight D5, just simply play bishop C4. Knight is protected, black can either protect it more, or else he can play some other moves like knight F6 or maybe like bishop F5 or something. ठीक है, knight C6 or like this, bishop F5 and all. And you can in future play very simply, something like get the knight out, kill it with the pawn, give it more support, get another knight out here or here, go for castle and all. ठीक है, तो आराम से खेल लोगे। ठीक है, और अब बचा क्वीन वाला। अगर उसने क्वीन से मारा तो क्या, सी इफ ही यूजेस द क्वीन एंड किल्स, यू कैन गो फॉर अ वेरी सिंपल मूव लाइक नाइट C3। ये क्वीन का पॉन प्रोटेक्टेड है तो इसमें कभी टेंशन नहीं होता। ओके, सो जस्ट प्ले नाइट C3 एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज लाइक he has to move somewhere. See, if he goes back, we get again a chance to put E4 because now the pawn is protected by knight and we can push further, attack the knight and all. So it would be very good for us like that. And the best move over here is to go take the queen at A5. So he goes, the queen goes on A5. Why? To pin the knight so that white cannot play E4. Otherwise black will kill it because knight is pinned. It cannot protect the pawn. Okay. Yeah, so A5, and as the queen goes on A5, just play a very simple move, bishop D2, pin se bhi bach gaye, we stopped the pin, and in future whenever knight moves there would be a discard attack on the queen too. That can be a big problem. And now even if white wants, he can play E4 because there is no pin active over here. Okay, if knight kills, you can simply kill it. There will be a discard attack on the queen only. So whatever he plays C6, you can just go for something E4 and then queen C7 and all like that. So if in short I say, then it was very easy for you to play if D4, D5, C4. This is Queen's Gambit. D4, D5, C4 is Queen's Gambit. If what if he kills Queen's Gambit accepted, हम लोग सीखेंगे part 2 में. Okay, on this I will make a separate video so that I can cover it in more detail. Okay, एक ही वीडियो में सब नहीं भरना है वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. अगर मारा तो क्या करना है अलग वीडियो में देखेंगे part 2. अगर सपोर्ट दिया E6 खेल के Queen's Gambit decline part 3, स्लाव डिफेंस C6 पार्ट 4, नाइट F6 और क्वीन से किल करने वाला मींस अगर नाइट F6 खेला तो क्या, नाइट F6 आई शोड यू ऑलरेडी व्हाट यू हैव टू, यू कैन सिंपली किल. ओके, एंड यू कैन देन प्ले मींस ऑन द मूव you just kill it. If knight kills, then go for E4, and if queen kills, then you can go for knight C3. Very simple, and I am sure you will play it very easily. So not going much detail in that, but जितना मैंने setup बता दिया तुम समझ गए रहोगे. Okay, now let's understand that why we play Queen's Gambit. Okay, Queen's Gambit का move order हमको समझ गया, and you saw that yeah, it is going smooth. I can play it. अभी थोड़ा confidence तुम्हें भी आया होगा खुद पे कि नहीं मैं खेल सकता हूँ, मुझे problem नहीं होगा. It's fine for me.
Okay, yeah, now let's go ahead. Now the only doubt what you would be having is sir ये मर गया तो क्या, वो पूरा accepted में कैसे वापस मिलेगा मैं दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना. Okay, now let's just see one more important thing. What? That कि why Queen's Gambit? See, Queen's Gambit क्यों खेलते हैं? The main reason is अगर इसने सपोर्ट दिया या नाइट आया या जो भी है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर प्लान इज, और एल्स इवन इफ ही किल्स, ओके फॉर एग्जाम्पल उसने मारा तो द करेक्ट मूव इज टू गो फॉर E3 और सीधा बिशप से इधर अटैक. द प्लान ऑफ व्हाइट इज हम लोग साइड पॉन से ब्लैक के सेंटर पॉन पे अटैक करते हैं. दैट इज द मेन रीजन व्हाई यू प्ले क्वींस गैम्बिट, कि इन फ्यूचर जब मारामारी होगी, मारामारी मतलब एक्सचेंज, जब एक्सचेंज होगा पॉन्स का तो क्या होगा, हमारा साइड पॉन जाएगा और ब्लैक का सेंटर पॉन. और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मूव व्हाइट प्लेस ब्लैक प्लेस नाइट F6 एंड वी जस्ट सिंपली गो एंड किल. Okay, yeah, like that. Or else you can take, for example, it doesn't kill right now, he plays, after that he plays some move E6. Okay, over here the next move is different, you can simply increase the attackers over here, but for example just you can even go for a simpler variation like E3. Now see what the difference comes is, for example now he kills, the what is the difference is when he wastes one move moving his pawn, the same move we utilize moving our bishop and developing our bishop. So pawn to dono ke hi mare, see both lost the pawn, but what difference white got? First, black's move was wasted on pawn move, which is already dead, the pawn is no more in the game, not useful, but white got a bishop developed instead of that. Okay, so white gets a faster development, that is one big reason about Queen's Gambit. Second reason, after exchange of the pawns, white get a pawn majority in the center. Black has only one center pawn where white has two center pawns, so white gets a pawn majority in the center. Okay, what are the three reasons? First, you get first reason is you get side pawn exchanged with center pawn of the black. Okay, second reason, you get a faster development of your bishop, and okay, bit of a smoother development. And third reason is, okay, and the third reason is you get a pawn majority in the center. This is the main three reason why white play Queen's Gambit. Okay, yeah, now one more thing, do you remember the intro setup in the introduction? What was our setup? If you see carefully, we had a pawn over here, pawns were over here, and we got the knight out, correct? The same thing is going to happen. If you see, know that setup is really easy for any player to play. Just simply go here, and if you see carefully, the same setup will come. Just watch the parts ahead of Queen's Gambit, part 2, 3, 4, and you will have a good enough knowledge of the opening for as per basics. Okay, so for up to 7, 8 moves of all the variations, you will understand it well and you will be able to play, and with a much more deeper explanation too. So hope so till here you are clear. Okay, just a quick revision and then we will stop it. First, what did we learn today? Queen's Gambit. What is Queen's Gambit? D4, D5, C4. D4, D5, C4. Okay. D4, D5, C4. This is Queen's Gambit. When white offers a pawn for a gambit for let opponent to kill. Okay. What is the plan? In future, we will open up the bishop and take the pawn back. What are the reasons for Queen's Gambit? Very simple. We want a side pawn exchange with a center pawn. First thing, so it is good for us. Second, so we get another thing is we get a faster development of bishop. We get center pawn majority. And one more thing, what I was going to tell, I forgot telling in between. That was to you remember in introduction of D4, I told when you are playing Queen's pawns opening, make sure you use your C pawns. Do not block it behind. The same thing happens as we play C4. See what happens. Either you go for C4, then you can easily get your knight over here, or else you have to play C3 to use the pawn, then you can get your knight over here. So another big advantage over here is you simply just play this pawn. For example, he plays this. Now you can easily get the knight over here. Your pawn is not being blocked. Otherwise, what happens? You cannot get over knight over here, and if you move the knight on C3, the pawn gets blocked behind, and it can be an easy target in future for black, and you should actually try to utilize a C pawn. It is a very, very useful thing for you to attack and defense also, especially in Queen's pawns opening. So C pawn is very important specifically to attack or defend the center. So you should now start using it because you have to go at a higher level and you want to improve your gameplay. Then it is very important for you to know how to use, and you must always use C pawn 2 in the game.
So to utilize the c pawn, it gets easy and you get a chance to play knight c3. Otherwise, you have to play pawn c3 and they take the knight on d2, like that. After that, he plays some simple knight move. You can play the knight, or else you can somewhat simply play e3. Just open it, give it a defense. That's all. And you will be very much comfortable to play Queen's Gambit. For example, he plays bishop b4 and this, and he goes for castle. You play this. He may get a knight out over here, or sorry, he may get a knight out over here, or push the pawn, or may play b6 or something, and whatever. Everything would be discussed in detail, but hope so you got an idea how to play Queen's Gambit and what are the reason. Okay, just last one thing to discuss: d4, d5, c4. Accepted part 2, e6, part 3, c6, part 4, Queen's Gambit. Okay, e6 orthodox variation, decline orthodox variation, Slav defense, Queen's Gambit accepted. Okay, and if knight f6, just kill it. Knight will kill and you go for e4 and you can play ahead. You will be comfortable with that. And if queen kills, then simple, you can take as knight c3. If queen goes back, no problem, go for e4. Or else if queen tries to pin you, just go for bishop d2 and then e4. Okay, yeah. Hope so you would be very much clear how to play, and you got an introduction related to Queen's Gambit. Okay. Last time, what is Queen's Gambit? It is a way to open up your center, open up the game. It is an opening. d4, d5, and c4. We gambit this pawn for center pawn, for side pawn, getting us use the c pawn. Okay, getting a faster development over here, and getting a center pawn majority after exchange of these two pawns. Okay. So with this, we will stop. Make sure, come on guys, quickly rejoin in my second video of Queen's Gambit. Okay, Queen's Gambit part 2, Queen's Gambit accepted. And over there, I'm going to show you one more very big secret, that how to get this pawn back. Means, for example, you played this. If he kills, now you play and you attack this. Okay. If he plays something knight f6 and e6, you can, if he plays any of these moves, you can simply kill it. But what if he plays b5? Correct or not? He can protect it. There is a big secret how you can still get the pawn even if he plays b5 and protect it. And that is completely covered in Queen's Gambit accepted. So guys, watch that. Okay. Yeah. Let's stop this video over here. Bye bye everyone. And come on, quickly rejoin in Queen's Gambit part 2. Watch.